we shall have a question on hydrogen bonding today. Of course, it is a JEEPYQ. It has appeared in earlier examinations of joint entrance examination, and MCQ is more than one option correct. And the question is, hydrogen bonding plays a central role in the following phenomenon. Ice floats in water, higher Lewis basicity of primary amines than tertiary amines in aqueous solutions. Formic acid is more acidic than acetic acid. Dimerization of acetic acid in benzene. अब ये चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये फिनोमिनन होता है। अगर हम देखें तो एक एक करके हमें प्रत्येक को देखना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, देन वी शैल टेक अप सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आल्सो। नाउ ice floats in water. Definitely it is related to water, and therefore we need to understand the composition of water, the structure of water, and the typical behavior of water. The bond angle of water is HOH 104.5 degrees, and of course the molecular formula is H2O. We also know that it has got a tetrahedral structure as represented here, in which there are two lone pairs of oxygen still available for reactions. Now, here the two molecules of water get bonded or linked through a weak bond, which is known as hydrogen bond. Of course, due to this, the dipole moment of water is high because of the hydrogen bond in water molecules. Now, let us have a consideration about its solid state, and that is known as ice. Ice तो हमको मालूम है, it has got a solid appearance, solid structure होता है, लेकिन केमिकली अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने पास के वाटर मॉलिक्यूल के 4 हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल से, और इस प्रकार से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है which has got a vacant space in between. अब आप देखिए यहाँ पर ये चित्र बताया गया है, here is a vacant space. Like that, there are several vacant spaces in between the solid crystalline structure of ice, and it is because of this vacant space that the density of ice is lesser than that of the liquid water. Dry solids की density liquid से ज्यादा होती है, लेकिन यही एक सॉलिड है जिसमें इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, and that is why it floats on water. And next, if we consider amines follow the order of basicity, amine पर भी एक क्वेश्चन है, तो उसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इस प्रकार से होता है। अब इसके तो डिटेल्स हमें अलग से समझना होगा, और ये जरूरी है, इट इज बिकॉज ऑफ द secondary amines contains 2 alkyl groups, tertiary contains 3 alkyl groups, and that has an electron donating effect. And not only this, there is another effect which is known as solvent or solvation effect. So depending upon this, in general, the amines follow the order of basicity, primary greater than secondary greater than tertiary. और अब अगर हम dimerization of acetic acid का देखें, 2 molecules of acetic acid in benzene dimerizement, they get linked through hydrogen bonding. These are the hydrogen bonds. 2 molecules form a bigger molecule which has got a covalent character, and therefore it is soluble in benzene. Otherwise, acetic acid तो ionic liquid है, and it gets ionized in water or suitable solvent. Now, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक ऑप्शन सी भी है जिसमें फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। इट इज सिंपली बिकॉज द एसिडिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, सिंपली बिकॉज एसिटिक एसिड हैज ए अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, alpha carbon atom, and because of this the acidity of acetic acid is lesser than formic acid. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं
तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन बी भी रिलेटेड है, and option C is not at all related with our hydrogen bonding, and option D is correct. Okay, so these are our final answers and explanation of these important questions. Please do subscribe to our channel. Thank you very much.